तो लेबलिंग में आते हैं। This is epiglottis. This is glottis. Trachea. This is pleura. The covering around the lungs is called as what? Pleura. मैं प्लूरा के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा. This is primary bronchi. This is actually the right side of lungs, and this is the left side of lungs. तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो मेनली आता है ना, कंपैरिजन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंग्स. तो मैं लेबलिंग में थोड़ा बहुत मेंशन कर देता हूँ. This is secondary bronchi. And right सर लेफ्ट लंग में सेकेंडरी ब्रोंकाई का नंबर कितना है? 2. दिखाई दे रहा है कि नहीं? This is tertiary. Tertiary bronchi numbers in the left lung is how many? 8. दिखाई दे रहा है? Now the next point is there is a oblique fissure. As you can see here, it is a oblique fissure. Obliquely arranged, that is why it is called as oblique. And what is the meaning of fissure? Fissure का मतलब क्या है? हाँ, folded structure or group-like structure is called as what? A fissure. Fissure word is always applicable to the external structure. Internal structure में fissure word नहीं आएगा. Externally कोई भी field होगा, कि group होगा, कोई folding होगा, then it is called as fissure. And it is obliquely arranged, so called as oblique. Because of the presence of the oblique fissure, you can see the left lung is having 2 chambers. The upper is called as superior lobe, and नीचे जो हो गया that is called as inferior lobe. अभी हम लोग राइट साइड में आते हैं. This is superior lobe. This is middle lobe. And superior middle के बीच में एक fissure present है, दिख रहा है आपको? And this is arranged like obliquely या horizontal. So this is called as horizontal fissure. Now this is another fissure called as what? Now oblique fissure. This is secondary bronchi. Here the number of secondary bronchi in the right side is how many? 3. And this is tertiary bronchi. The number of tertiary bronchi is here
कितना टर्शियरी ब्रोंकाई ये देखिए तो 4 3 3 कितना हो गया 10. So 10 tertiary bronchi in the right side and 8 tertiary bronchi in the left side. So what is the comparison between the right and left lung? बताइए तो which is exceptional here मतलब which is present in the right not present in the left. एक तो middle lung हो गया दूसरा हो गया horizontal दिखाई दे रहा है and by means of the numbering of the secondary bronchi and tertiary bronchi. यही है question. बोलिए हाँ मैं लिख रहा हूँ उसको. This is called as inferior lobe. Similarity क्या आ गया inferior and superior तो common है and oblique fissure भी common है लेकिन बाकी जो है वो difference है कि नहीं clear है. This is diaphragm. This is cardiac notch. The position of heart. The space which is present in between the two lungs is called as mediastinal space or mediastinum. समझ में आ गया. मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ब्रोंकियल इंटरकम का समझा दिया था. तो ब्रोंकियल इंटरकम में तो मैंने यहाँ पे खाली डायग्राम में टर्शियरी ब्रोंकाई तक दिखाया है लेकिन उसके बाद जो रेस्पेक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो मैंने पहले ही दिखा दिया अप टू द एल्वियोली. ठीक है. तो आई होप आप लोग का ये डायग्राम एंड लेवलिंग कंप्लीट हो गया है. पॉइंट्स कुछ लिख लेते हैं. राइट लंग जो है वो लार्जर है 625 ग्राम वेट है ब्रॉड है एंड compressed. As the right lung is large, that is why they contains 3 lobes. है कि नहीं. लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट लंग्स के बारे में देखें that is small and 565 उसका वेट है नैरो है एंड इलॉन्गेटेड. मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि इलॉन्गेटेड इज बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ द हार्ट एंड ये ब्रॉड इसीलिए क्योंकि पोजीशन ऑफ द लीवर इन द राइट साइड जस्ट बिलो द डायफ्राम. राइट. देखिए जो बाय बर्थ होते हैं ना ड्यूरिंग द बर्थ लंग्स होते हैं बच्चों के केसेस में. इनफैक्ट आई एम टेलिंग अबाउट द न्यूबॉर्न बेबी. द कलर ऑफ द लंग्स इज कंप्लीटली पिंक. पिंक कलर होता है न्यूबॉर्न बेबी में जो लंग्स है. एंड एज द एज इंक्रीजेस as the respiration progresses the carbon particle to be deposited in the lungs makes the lungs color into dark. And in case of smokers or the persons which are living in the very polluted area the lungs is blotted very dark. As the darkening increases the surface area of the alveoli decreases. And surface area decrease करेगा तो एक्सचेंज इफेक्टिव होगा कि इनइफेक्टिव होगा. इनइफेक्टिव होगा. अगर इनइफेक्टिव एक्सचेंज होगा
तो उससे क्या होगा, ब्रीदिंग रेट फास्टर होगा कि ब्रीदिंग रेट स्लो होगा? फास्टर होगा, क्योंकि बॉडी का रिक्वायरमेंट कम नहीं हो रहा है, बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट है उतना रिक्वायरमेंट होगा ही, लेकिन आपका एक्सचेंज का जो एरिया है वो कम हो रहा है, तो क्या होगा, उसको कंपेंसेट करने के लिए ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा ना, फास्टर हो जाएगा। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ स्मोकर्स द ब्रीदिंग रेट इज फास्टर, दैट मींस द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज नॉर्मली 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, मोर और लेस हम लोग 12 टाइम्स ही पकड़ते हैं। हार्टबीट रेट कितना है, 72, लेकिन ब्रीदिंग रेट क्या है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन टुगेदरली कॉल्ड एज वन ब्रीदिंग। तो हाउ मेनी ब्रीदिंग टेक्स प्लेस पर मिनट ना, 12 टू मैक्सिमम, नॉर्मली हम बात करें अप टू 16, वो वैरी करता है, बट ऑन एन एवरेज वी आर टेकिंग द 12। लेकिन जो स्मोकर्स है उनके केस में ब्रीदिंग रेट फास्टर होगा। जो बेबी है, जो बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनके केस में लंग्स का साइज बड़ा है कि छोटा है? बहुत ही स्मॉल है लंग्स का साइज। तो लंग्स का साइज छोटा है तो सरफेस एरिया लेस होगा कि सरफेस एरिया मोर होगा? लेस होगा। इसीलिए बच्चों के केसेस में, इन केस ऑफ चिल्ड्रन, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर, रेट ऑफ हार्टबीट इज फास्टर। बात को समझ में आ रहा है? हम लोग जैसे ही हाई अल्टीट्यूड में चले जाते हैं, किसी हाई अल्टीट्यूड एरिया में जहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है एयर में कम हो जाता है, इसीलिए ब्रीदिंग रेट क्या होता है ना, फास्टर हो जाता है। हर चीज लिंक्ड है, आपको खाली लिंक करना पड़ेगा हर चीज, अदरवाइज हम लोग को क्वेश्चंस बनाना डिफिकल्ट होगा। तो वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम बात कर रहे थे लंग्स के, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के बारे में लिख देते हैं। lungs present within thoracic cavity is a airtight chamber closed by rib cage, diaphragm, sternum and vertebral column. एंड कभी कभी ये दांत खाया जा रहा है सुबह से, खा के नहीं आया क्या घर से? एक तो पीछे बैठता है, समझ में नहीं आता कि आगे बैठने में तुझे तकलीफ क्या है, ऐसे ही। और खा क्यों, क्या खा के नहीं आया घर से क्या? नहीं, ऐसे ही नहीं चलता है क्लास में, तो निकल जाए क्लास से। सो अगर किसी का ये थोरैक्स जो अगर पंक्चर्ड हो गया, थोरैसिक कैविटी क्या होगा, पंक्चर्ड हो गया, होल हो गया, डेथ हो जाएगा। क्यों? भाई सो क्योंकि एयर टाइट प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, डेथ। ब्रीदिंग क्या होगा ना, स्लो हो जाएगा, ब्रीदिंग जो है वो इनफेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ना प्लूरा में आते हैं और प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन एक्चुअली टू डिफरेंट, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज parietal and inner pleural membrane is called as visceral। अभी छोटा सा क्वेश्चन है कि आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज टू thoracic cavity और क्लोज टू lungs? That is close to thoracic cavity. Whereas visceral or inner pleural membrane is close to
lungs. एंड इन दोनों के बीच में which cavity is present? Pleural fluid which is present in the pleural cavity. So in between the pleural cavity, in between the pleural membrane, parietal and visceral, there is a cavity present called as pleural cavity, which is filled with pleural fluid, and इस pleural fluid को secrete कौन करता है? ना secreted by pleural membrane. ये pleural membrane ही pleural fluid secrete करता है. And fluid कौन बोलेगा? Anyone? Number one, lubrication. Number two, friction movement की frictionless movement. Frictionless movement. So frictionless movement of the lungs is because of this pleural fluid. Third क्या है? ध्यान से सुनिएगा, दोबारा नहीं समझाएंगे. देखिए, लंग्स के जो अंदर जो कैविटी है उसको बोलते हैं पल्मोनरी एयर कैविटी. एंड आउटसाइड क्या है? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो होता है वो हाई होता है. लंग्स का प्रेशर लो है. इंट्रापल्मोनरी एयर प्रेशर इज लो and atmospheric air pressure is high. So during inspiration, what is happening from high partial pressure to low partial pressure? So air is moving. मतलब lungs के अंदर low partial pressure है during inspiration. Low means negative. Low means what? मतलब lungs के अंदर negative pressure है कि positive pressure है? Negative, low pressure during the breathing. That is why the air from the atmosphere that is entering into the low pressure present in the lungs. And ये कैसे संभव है? Why the lungs air pressure is low? Now because of this pleural fluid. ये pleural fluid क्या करता है? ना पुल करके रखता है, खींच के रखता है. पुलिंग करने से क्या होगा भाई? एरिया इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? एंड एरिया इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर. एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा? सो थर्ड फंक्शन क्या हो गया? ना cooling the pleural membrane to maintain low or negative pressure in lungs. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए अगर ये प्लूरल फ्लूइड का क्वांटिटी कम हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा, ये कूलिंग इफेक्ट मेंटेन नहीं होगा तो नेगेटिव प्रेशर भी मेंटेन नहीं होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. तो आप लोग को समझ में आ गया? लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है? Structural part of the respiratory system we have completed. Now we will start the steps involved in the respiration and then we will go for the mechanism of breathing. चलिए next page में. मैं बताऊंगा पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग फिर से बताऊंगा मैं. The steps involved in respiration. Steps involved in respiration.
डायग्राम में ही मैंने स्टेप्स दिखा दिया है, बस खाली मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, step number 1 is breathing. Breathing involves two steps or two process. One is inspiration, और inspiration का other name क्या है? Inhalation, and another is expiration, otherwise called as exhalation. Together we called as number 1 step breathing. Breathing किसके बीच में हो रहा है? The lungs and atmosphere. Step number 2, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि हाउ मेनी स्टेप्स है? 5 steps. What are the 5 steps involved here? Number 1 is breathing. Number 2 is exchange of gases. किस के बीच में यहाँ पे gaseous exchange हो रहा है? देखिए, between the lungs and blood vessels. So between lungs alveoli and blood. Step number 3, exchange of transport of respiratory gases. Transport of respiratory gases, that is oxygen and carbon dioxide. कैसे transport हो जाएगा? Oxygen to the cells or to the tissue आ रहा है, and carbon dioxide from the cell or from the tissue आ रहा है. So this is step number 3. Now comes to the step number 4. Exchange of respiratory gases between blood and body cells or tissue. And the 5th step, utilization of oxygen by cells to release कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन. पढ़े हो ना? सेलुलर रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन हम इस चैप्टर में डिस्कशन नहीं करेंगे. मतलब इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ ये फर्स्ट 4 स्टेप डिस्कशन करना है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो ये जो 5th स्टेप हो गया, जिसके अंडर ग्लाइकोलाइसिस आएगा, क्रेब्स साइकिल आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा, पढ़े हो? एंड ये कहाँ पे आ जाएगा ना? आपकी बॉटनी में पढ़ाया जाएगा, सेल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन में. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर का नाम क्या था? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज. मतलब क्या समझे, क्या पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्रीथिंग पढ़ेंगे, एक्सचेंज पढ़ेंगे एट द 2 डिफरेंट साइट प्लस ट्रांसपोर्ट. ठीक, so we are coming to the mechanism of breathing. आई होप आप लोग का ये कंप्लीट हो गया है. हो गया सबका? Yes or no? Yes. So I'm coming to the first step, mechanism of breathing.
mechanism of breathing. Breathing, the event is takes place for the 5 seconds. जो breathing है तो 5 सेकंड का इवेंट है, that is why I told you 12 times per minute. याद आया नहीं? As it is 5 seconds, that is why it is 12 times per minute. पहले हम लोग इसमें इंस्पिरेशन में आते हैं. इंस्पिरेशन का जो टाइमिंग है दैट इज 2 सेकेंड. तो एक्सपिरेशन का टाइमिंग कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड. तो 2 + 3 दैट इज 5 सेकेंड. दैट इज द टाइमिंग ऑफ वन ब्रीथिंग. Inspiration, which is otherwise called as inhalation, it involves contraction of two inspiratory muscles. The contraction of two inspiratory muscles. And वो inspiratory muscles का नाम ही सबसे important है. One is diaphragm or phrenic muscle. Second is external intercostal muscle. मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा. ठीक है. As because already I've told you कि inspiration is a contraction process की relaxation process of muscles. And muscle contraction is a ATP dependent process. Muscle contraction is a ATP dependent process, and those process which need ATP is called as active process. तो फिर inspiration active हुआ कि passive हुआ? इसीलिए inspiration क्या हुआ ना? Active process. Very, very important. Let's see how the inspiration takes place. Everybody try to understand first. देखिए पहले, फिर मैं लिख देंगे, फटाफट समझा दूंगा. पहले समझ लीजिए, ये आपका बेली साइड क्या है? वेंट्रल और डॉर्सल. बैक साइड क्या है? साइड क्या है? लैटरल. नीचे वाला पार्ट क्या है? पोस्टीरियर. ऊपर वाला पार्ट क्या है? एंटीरियर. समझ में आ गया? thoracic cavity should be expand in all direction. thoracic cavity अगर चारों साइड से अगर इंक्रीज किया तो ही लंग्स का साइज भी इंक्रीज करेगा. इट इज प्रेजेंट इन द एयर टाइट चैम्बर कॉल्ड एज thoracic cavity. muscles contraction leads to the increasing of the thoracic cavity anteriorly and posteriorly. तो कौन से मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से thoracic cavity इंक्रीज कर रहा है एंटेरो पोस्टीरियरली? डायफ्राम और phrenic muscles. How many numbers of ribs are present? 12 pair, 24. ठीक है. And in between the ribs, the muscles present is called as intercostal muscle. So intercostal muscle का exact location क्या है ना? In between the ribs. And अगर ये outside present है तो external intercostal,
अगर ये इनसाइड की तरफ प्रेजेंट रहेगा तो इंटरनल इंटरकोस्टल, एंड एज बिकॉज द नंबर ऑफ द रीब इज 12 पेयर, सो इन बिटवीन गैप कितना होगा 11 पेयर रहेगी नहीं, एंड दैट इज व्हाई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का नंबर कितना होगा था 11 पेयर। वैसे ही इंटरनल इंटरकोस्टल का नंबर कितना होगा 11 पेयर, मतलब 22। समझ में आ रहा है? एंड व्हेन दिस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो रीब केज है, फ्रंट में स्टर्नम, बैक साइड में वर्टिब्रल कलम, एंड आगे भी स्टर्नम, सॉरी आगे वर्टिब्रल कलम, सॉरी आगे रिब से, पीछे भी रिब से, साइड में भी रिब से, रिब केज पूरा ये एक्सपैंड करेगा कि नहीं? अब जब हम लोग सांस लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो ये थोरैक्स आगे की तरफ आता है, पीछे की तरफ भी जाता है, साइड में भी इंक्रीज करता है, मतलब डॉर्सली, वेंट्रली, लैटरली, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच मसल? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब ये दोनों मसल अगर एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा कि नहीं? यस। सो लंग्स का साइज भी इंक्रीज करेगा, रेस्ट उसके हिसाब से प्रेशर क्या होगा ना, डिक्रीज करेगा, मतलब नेगेटिव और लो प्रेशर हो गया, एंड हाई प्रेशर वाला जो एयर है एटमॉस्फेयर में वो एंट्री करेगा कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इंस्पिरेशन। समझे? तो contraction of threading muscle that leads to increasing thoracic cavity, antero-posteriorly. Contraction of the external intercostal muscle, which already I told, 11 pair in between the ribs. The contraction of the external intercostal muscle leads to increasing thoracic cavity, dorsoventrally and laterally. That gives rise to increasing size of lungs volume. That leads to decreasing intrapulmonary air pressure. इंट्रापल्मोनरी मतलब इनसाइड लंग्स, तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज किया, so decreasing intrapulmonary air pressure with respect to atmospheric air pressure. तो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर के रेस्पेक्ट में ये डिक्रीज कर रहा है, that leads to the air rushes into lungs, causing inspiration. बताइए मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, किसी को कोई डाउट है? मसल्स को नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नॉर्मल वो शॉर्टनिंग होगा, है कि नहीं? अगर आप उसको एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी आप अगर खर्चा करेंगे, अरे आप लोग गन्ने के जूस पिए हैं कि नहीं? पीते हैं ना? वो एकदम जो पहिया उसका चलता है ना, उसके अंदर वो धकेल देता है वो गन्ने को, एक बार दो बार, उसके बाद और एफर्ट लगा के उसको और घुसाता है, थोड़ा सा निकल आता है और, अरे है कि नहीं? वही सेम चीज यहाँ पे भी,
मसल्स को नॉर्मली कंट्रैक्ट करेंगे तो नॉर्मल इंस्पिरेशन होगा। अगर आप मसल्स को एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे तो इंस्पिरेशन हो जाएगा फोर्सफुली। नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन चल रहा है, आपको पता चल रहा है, आप बैठे हैं, चल रहा है अपने आप 12 टाइम्स पर मिनट चल रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन आपको बोला जाएगा कि आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन यू जस्ट ट्राई टू गेट द एक्स्ट्रा एयर इन, कॉल्ड एज फोर्सफुल इंस्पिरेशन। लीजिए, हो गया, एक्स्ट्रा एफर्ट दिए कि नहीं, अरे दिए कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, फोर्सफुल inspiration. The forceful inspiration is because of the same contraction of muscle or relaxation of muscle. Contraction of muscle and contraction of muscle is active process की passive process. इसीलिए ये हो गया आपका कौन सा, नॉर्मल इंस्पिरेशन। अभी सेकंड में आते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ और फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ extra contraction or forceful contraction of both inspiratory muscle and that is why it is also a active process. समझ में आया? इसलिए नॉर्मल इंस्पिरेशन भी एक्टिव था, फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी एक्टिव। अभी हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, एक्सपिरेशन। The muscle which is actually contracted will relax again, or that muscle will be always present in the contracted state. अब when the muscle will relax, the event will be in the reverse way. Contraction of muscle leads to shortening. Relaxation of the muscle leads to lengthening. Always remember. Contraction leads to shortening and relaxation leads to lengthening. अब ये same inspiratory muscle जब relax करेगा तो एंटेरो पोस्टीरियरली, डॉर्सोवेंट्रली, लेटरली, चारों साइड से ये थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम क्या होगा, अभी डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज। तो लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज, pressure inside the lungs will increase with respect to atmospheric air pressure and the air will be comes out, called as what, expiration. So expiration is a muscle contraction process की relaxation process, पैसिव हुआ कि एक्टिव हुआ, याद रहेगा। तो अब कम टू नंबर 3, एक्सपिरेशन। रिलैक्सेशन ऑफ विच मसल, एक्सपिरेटरी मसल की इंस्पिरेटरी मसल, एक्सपिरेशन इज बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स, इसीलिए क्वेश्चन आता है। 2 बार एक्सपिरेटरी मसल बोल रहा है, क्या होगा आंसर, इंस्पिरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वही तो रिलैक्स करेगा ना, रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल, that is why it is a passive process.
The relaxation of both inspiratory muscle decreasing the size of thoracic cavity in all directions. That leads to decreasing of size of lungs volume, leads to increasing of intrapulmonary air pressure. And the air, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ with respect to atmospheric air pressure. That leads to the air comes out. Causing expiration. Now we are coming to the number 4. Forceful expiration. Just try to feel the difference. आप फोर्सफुल इंस्पायर्ड करिए एंड फोर्सफुल एक्सपायर्ड करिए, करके देखिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा. पहले फोर्सफुल इंस्पायर्ड करिए एंड फिर फोर्सफुल एक्सपायर्ड भी करिए. करिए करिए, करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा. हो गया? विच इज पेनफुल? फोर्सफुल एक्सपीरेशन. समझ में आएगी? तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन में आपको ऐसे फील हुआ कि नहीं कि भाई स्टोमक के अंदर जो चीज था, एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन था वो ऊपर उठ रहा है? फील हुआ? यही तो मैकेनिज्म है, इसीलिए बोला कि फील करिए, तभी मुझे समझाने में इजी होगा. लेट्स सी. Forceful expiration is actually due to contraction of two muscles, that is abdominal muscle and internal intercostal muscle. क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि रिलैक्सेशन हो रहा है? ये एक्टिव प्रोसेस होगा कि पैसिव होगा? पैसिव होगा. मसल रिलैक्सेशन इज पैसिव प्रोसेस. बहुत ही सिंपल चीज है, फिर भी आप लोग गलत करते हो. Which is the only process which is passive? Expiration is a passive. बाकी सब क्या है? Normal inspiration, forceful inspiration and forceful expiration all are active because all are involvement of muscle contraction. Let's see. Contraction of abdominal muscle and contraction of internal intercostal muscle. Internal intercostal मैंने बताया था आपको, कितना पेयर होगा? 11 पेयर in between ribs. See, here
supposed to be, this is the diaphragm. यहाँ पे क्या है ना, sternum. And these are the ribs. ठीक है? Here actually the abdominal organs are present. Abdomen के अंदर abdominal organs present होता है. And these are the muscles which is extended from abdominal organs to the thoracic chamber. मतलब यहाँ पे जो abdominal muscles है, they are connecting the abdominal organs with the thorax. So these are abdominal muscles. गौर से सुनिएगा, एक ही बार समझ में आना चाहिए. When this abdominal muscles will contract, अब ये abdominal muscles contract करेंगे. Contraction of which muscle? Abdominal muscle. Abdominal muscles अगर contract किया, तो ये जो diaphragm है, ये और ज्यादा convex हो जाएगा कि नहीं? Increasing convexity की decreasing convexity? Increasing convexity. More dome set. तो diaphragm का जो dome set वो ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? Convexity increase किया, तो ये thoracic cavity का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीज करेगा कि नहीं? कौन से डायरेक्शन में? Anteriorly, posteriorly. So because of the contraction of the abdominal muscles, the increasing convexity of the diaphragm leads to decreasing thoracic cavity in anterior. करेगा dorsal-ventrally and laterally. बताइए, दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थोरेसिक कैविटी डिक्रीज किया कि नहीं? यस सर. थोरेसिक कैविटी डिक्रीज करेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा. प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा. इंक्रीज करेगा एंड द एयर विल बी कम्स आउट. एंड इसीलिए आपको फील हुआ कि जैसे जो अंदर का जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो ऊपर उठ रहा है. सही में उठ रहा है. देखो, आपने फील किया प्रैक्टिकली, मैंने आपको थियोरेटिकली समझा दिया. चलिए आगे बढ़िए. So contraction of the abdominal muscle that leads to decreasing the size of thoracic cavity. Antero-posterior. And here it is. आप मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे जो डायग्राम अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि इंक्रीजिंग कन्वेक्सिटी ऑफ डायफ्राम. ये जो थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हुआ एंटेरो पोस्टेरियरली, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? ना इंक्रीजिंग convexity of lens. Sorry, diaphragm. So due to the increasing convexity of diaphragm, the thoracic cavity volume decreasing the size of thoracic cavity dorsoventrally laterally. Now it leads to decreasing the size of lungs volume, and that leads to
increasing the intrapulmonary air pressure. And that leads to causing forceful expiration. समझ में आ गया? So I'm coming to the next topic. ये कुछ एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपको बस खाली समझा के मैं आपको बुला दूंगा, आप लिख लीजिएगा। एडिशनल पॉइंट है, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, नेट बेस्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होने से आपको फायदा होगा। जैसे कि फर्स्ट आते हैं हिकअप्स, पढ़े हो? हाँ, क्या है हिकअप्स? क्या है हिचकी? क्या है? एपिग्लोटिस का एबनॉर्मल मूवमेंट। See everyone, try to understand. हिकअप्स क्या है? सडन जर्की मूवमेंट है कि नहीं? सडन जर्की इंस्पिरेटरी साउंड की एक्सपिरेटरी साउंड? नॉर्मल साउंड क्या होता है? एक्सपिरेटरी साउंड। लेकिन हिकअप्स क्या है? इंस्पिरेटरी साउंड। सडन जर्की इंस्पिरेटरी साउंड ड्यू टू सडन और स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। सडन और स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन। स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब इनवॉल्यूंटरी सडन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज स्पैस्मोडिक। तो स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट? डायफ्राम। ठीक। And immediate closing of glottis by epiglottis leads to the sound production called as what? Hiccups. So please write. It is a sharp jerky. It is a sharp, 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 jerky, JERKY, inspiratory sound. It is a sharp, jerky, inspiratory sound produced due to sudden spasmodic contraction of diaphragm. Spasmodic, SPASMODIC. Sudden spasmodic contraction of diaphragm. ये स्पैज्म जो वर्ड है ना, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी धीरे धीरे हम यूज करेंगे अलग अलग चैप्टर में। इस चैप्टर में अस्थमा आएगा, अस्थमा भी ये स्पैज्म वर्ड आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो स्पैज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड immediate closing of glottis by epiglottis. Immediate closing of glottis by epiglottis. Coming to the number 2, snoring. रात में ज्यादा सुनाई देता है, सोने के टाइम में कि दिन में जगने के टाइम? सोने के टाइम। कभी सोचा वैसे क्यों होता है? क्या ये सबके केस में होता है? नो, कुछ खास लोगों में होता है जिनका टोंग का साइज थोड़ा सा लंबा है।
देखिए कितना बढ़िया चीज, साउंड बॉक्स और लैरिंग्स, राइट? द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स इज कॉल्ड एज व्हाट? ना ग्लॉटिस. व्हेन द पर्सन विल स्लीप, उसका जो हेड है नीचे की तरफ रहता है, तो टॉन्ग क्या होता है ना, जिनका थोड़ा सा लंबा होता है, वो इनरोल हो जाता है. इनरोल होके वो जो ग्लॉटिस है उसको पार्शियली ब्लॉक कर देता है. And that partial blockage of the glottis by the tongue leads to a vibratory sound released. है कि नहीं? And that is called as what? The snoring. And ये भी inspiratory sound है कि expiratory sound है? Most frequently to be occurs in the coaches of train. Right. Snoring में लिखिए noise produced during sleep. ये sound नहीं है, ये noise है. Sound मत लिखिए, noise लिखिए. Noise produced during sleep. स्मूथ साउंड है कि रफ है? So right, full stop there. It is the rough rattling inspiratory sound. Rattling मतलब vibrated. Rattling कहाँ से आया? Rattle snake से rattling आया है. Rattle snake देखे हैं? वो अपना जो टेल में ना बहुत सारा झुमका लगा के घूमता है, और जैसे ही गुस्सा हो जाएगा अपना टेल को ऐसे वाइब्रेट करेगा कि झुमका एकदम इतना जोर से बजेगा कि लगेगा कि भाई गुस्से में, छोड़ देते हैं उसको. That rattling sound. So it is the rough rattling inspiratory noise produced by vibration of vocal cord. It is the rough rattling inspiratory noise produced by vibration of vocal cords. Vibration of vocal cord due to partial blockage of glottis by tongue. Due to partial blockage of glottis by tongue. Next है yawning. कब ये होता है आप लोगों का? हाँ, जब बहुत ही ज्यादा हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं कि मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होते हैं? मतलब जब हम लोग रेस्ट लेते हैं पूरा, जब हम लोग पूरा स्लेजी फील करते हैं, यस और नो? देखिए हर चीज लिंक है, आपको रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं. यू आर फीलिंग स्लेजीनेस, यू आर फीलिंग इनएक्टिवनेस, मेटाबॉलिकली आप बहुत ही इनएक्टिव हैं, मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन का जो टेंशन है, प्रेशर है, जो कंसंट्रेशन है वो कम है. So it is due to what? Low oxygen tension की low carbon dioxide tension. Low oxygen tension. देखिए नहीं, हम लोग माउथ को ओपन करके एक्स एग्रीगेटेड ओपनिंग ऑफ द माउथ. कभी देखे हो मैं क्लास में पढ़ाने के टाइम में कभी यर्निंग करता हूँ? Why so? Because I am metabolically active. आप अगर क्लास में थोड़ा सा ऐसे ही फील करेंगे अपने आप को तो भी अच्छा हो. अगर आप लोग चुपचाप ऐसे ही बैठेंगे सोते सोते, यर्निंग तो आएगा ही, रहेगी नहीं. राइट प्लीज. It may be stimulated due to drowsiness or fatigue. It may be stimulated due to drowsiness or fatigue. It may be stimulated due to drowsiness or fatigue. Good stuff. It is mainly due to low oxygen tension. Tension मतलब pressure. Maybe or it mainly due to low oxygen tension. लिखे. नेक्स्ट में आते हैं हम लोग. Forced deep breathing.
Forced deep breathing or forced deep inspiration? कभी ये किए हैं आप लोग? क्या? हाँ, चुपचाप बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ काम हो गया ऐसे होता है ना, मतलब इंस्पिरेशन हुआ कि एक्सप्रेशन? फोर्स्ड डीप इंस्पिरेशन। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? मैंने क्या बोला, ये एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़िया देगा। व्हाई इज इट सो? नहीं भाई, वो तो यहाँ पे यनिंग हो गया, लो ऑक्सीजन टेंशन है इसलिए यनिंग होता है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्या? आपको पता है आपके बॉडी के लिए ऑक्सीजन जितना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही जरूरी है। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। अगर आपके एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया ना, डेथ हो जाएगा हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन जरूरी है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो इसीलिए बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गया, ऑक्सीजन विल बी नॉट अवेलेबल टू द टिश्यू। ऑक्सीजन आपके बॉडी में है, फिर भी टिश्यू को नहीं मिलेगा। टिश्यू को तभी ऑक्सीजन मिलेगा जब आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो बताइए इनडायरेक्टली हुआ कि नहीं? अगर आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर गया तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। एंड दैट व्हाई द रीजन वी गो फॉर द फोर्स्ड डीप ब्रीथिंग। फोर्स्ड डीप ब्रीथिंग में क्या है, हम लोग जोर से सांस लेते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बॉडी में एंट्री कर जाए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर जाने से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू द टिश्यू और सेल्स विल बी ऑकर्स। बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको समझ में आएगा। सो राइट प्लीज, इट ऑकर्स ड्यूरिंग रेस्ट। It occurs during rest because of less CO2 in blood. Because of less CO2 in blood. Next हम लोग आते हैं डीप और बेली और डीप ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग और that is normal breathing और diaphragmatic breathing और abdominal breathing। I'm telling, I'm asking about the male, not for female. Male की बात कर रहे हैं हम लोग। जब हम लोग इंस्पायर करते हैं तो which actually mostly increasing the size, whether it is thorax or it is abdomen. मेल की बात कर रहे हैं। क्या हम लोग को क्या फील होता है, हम लोग का बेली एक्सपैंड करता है ज्यादा या थोरैक्स का साइज एक्सपैंड करता है ज्यादा? क्या एक्सपैंड करता है? बेली। फीमेल के केसेस में बेली एक्सपैंड ज्यादा करता है कि थोरैक्स एक्सपैंड ज्यादा करता है? कारण क्या है ना, एब्डोमेन में फीमेल के केसेस में दो एडिशनल ऑर्गन प्रेजेंट है, वन पेयर ऑफ ओवरी एंड लार्ज यूटेरस। इसीलिए स्पेस इनसाइड द एब्डोमेन इज लेस इन केस ऑफ फीमेल, मोर इन केस ऑफ मेल। अरे समझे कि नहीं? तो दैट इज व्हाई द बेली ब्रीथिंग और डीप ब्रीथिंग और डायफ्रामेटिक और एब्डोमिनल ब्रीथिंग इज मोर कॉमन इन मेल और फीमेल। मेल में ज्यादा कॉमन है, फीमेल में लेस होता है। तो फीमेल में थोरैसिक ब्रीथिंग मोर, एब्डोमिनल ब्रीथिंग लेस। मेल में क्या होगा, एब्डोमिनल ब्रीथिंग मोर, थोरैसिक ब्रीथिंग लेस। एंड प्रेगनेंसी के केस में क्या होगा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द फीमेल हैज एडिशनल
fetus growing inside the uterus, उस टाइम में कोई प्रेशर डाल सकते हैं हम fetus के ऊपर, इसीलिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग पूरा जीरो हो जाता है. ओनली विच ब्रीदिंग, थोरेसिक. ये सब जानने वाला चीज. क्वेश्चन पूछेगा thoracic and abdominal breathing, which is the normal breathing, which is a normal breathing. Abdominal में मैंने लिखा कि thoracic में लिखा abdomen, so abdominal breathing is a normal breathing. मेल के केसेस में more abdominal breathing and less thoracic breathing. And in case of female, more thoracic breathing and less abdominal breathing. In pregnant female, only thoracic breathing. समझ में आया? Now we are coming to, देखो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंप्लीट कर लिए. Now we are coming to pulmonary or lungs volume. Pulmonary or lungs volume. Number one, tidal volume, TV. तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? It is actually the amount of air inspired or expired. The amount of air inspired or expired in a normal breathing. अब नॉर्मल ब्रीदिंग आप लोग का चल रहा है 12 टाइम्स पर मिनट. अमाउंट ऑफ एयर एंट्री करता है या तो अमाउंट ऑफ एयर एग्जिट करता है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम फोर्सफुल वॉल्यूम है कि नॉर्मल वॉल्यूम? नॉर्मल, याद रखिए. एंड दैट इज 500 ml. ईच इंस्पिरेशन एंड ईच एक्सपिरेशन में आपका कितना एयर इन एंड आउट होता है? 500. लेकिन ये 500 क्या एल्वियोली तक रीच करता है? अगर आप पाइप के थ्रू पानी किसी जगह से किसी दूसरे जगह को भेज रहे हैं, क्या 100% वाटर विल गो टू द डेस्टिनेशन? नो. कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो वो पाइप में रह जाएगा कि नहीं? सेम यहाँ पे भी होता है. 500 ml is not reaching the alveoli at the site of exchange. Only 350 is reaching. 150 जो है वो respiratory tract में रह जाता है. And that 150 ml does not participate in the exchange of gases. And that is called as anatomical dead space volume. So anatomical dead space volume
the air volume present in conducting part of respiratory tract conducting part of respiratory tract and do not participate in the exchange of gases. That is 150 ml. कितना एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है 350. ये हो गया नंबर 1 टाइटल वॉल्यूम. नंबर 2 इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. Extra amount of air forcefully inspired. समझ रहे? नॉर्मल इंस्पिरेशन मतलब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500, लेकिन फोर्सफुली जो इंस्पायर करेंगे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना आईआरवी. एंड दैट इज 2500 to 3000 ml. तो आप जब फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं उसके थ्रू 2500 to 30 और 3000 ml जो है वो एयर एंट्री करता है फोर्सफुली. दैट इज कॉल्ड एज आईआरवी. नंबर 3 एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. दैट इज ईआर. तो ये क्या होगा? नॉर्मल एक्सपिरेशन की फोर्सफुल एक्सपिरेशन. यस. एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर forcefully that is expired. And that is approximately 1000 to 1100 ml. सबका वॉल्यूम आपको याद रखना है कंपलसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. आप डेफिनेशन याद मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम आपको कंपलसरी याद रखना. नंबर 4 देखिए, फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी आपका लंग क्या पूरा खाली हो जाएगा? Yes, some amount of air will be still present inside the lungs, and that is called as what? Residual volume. And ये जो residual volume है कभी भी बाहर नहीं निकलता है. It is always present inside the lungs, never comes out. ठीक है? It is the air volume present in lungs even after forceful expiration. Even after forceful expiration, and it never comes out.
इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा इट इज 1100 to 1200 ml. ये हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा कि कैपेसिटी पढ़ा? वॉल्यूम पढ़ा. लेट्स सी. इधर देखिए एक सेकंड के लिए. नॉर्मल एवरीबॉडी, मैं बार बार नहीं बोलूंगा. नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन चल रहा है कि नहीं? मतलब ये क्या है? टाइटल वॉल्यूम. इंस्पिरेशन मतलब अप, एक्सपिरेशन मतलब डाउन. इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन. फिर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, है कि नहीं? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप फोर्सफुली एक्सपायर भी कर सकते हैं कि नहीं? Then this will be called as what? ये जो वॉल्यूम हो गया इसको क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम. और टीवी टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे कि नहीं? टीवी. नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन. एंड दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फोर्सफुल इंस्पिरेशन कॉल्ड एज व्हाट? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसको क्या बोलेंगे? फोर्सफुल एक्सपिरेशन कॉल्ड एज ERV. Expiratory reserve volume. And the amount of air which is always present inside the lungs never comes out. RV हो गया. ये चार टोटल लंग्स का वॉल्यूम हुआ कि नहीं? ठीक. Now what is your capacity? आप कितना इंस्पायर कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? नॉर्मल प्लस फोर्सफुल रहेगी नहीं? And you how much amount you can expand? Normal plus forceful. So here it is, normal inspiration plus forceful inspiration is called as what? Na inspiratory capacity. रहेगी नहीं? वैसे ही normal expiration plus forceful expiration will be called as what? Na expiratory capacity. देखो वॉल्यूम के बाद में कैपेसिटी में आ गया, समझे कि नहीं? Amount of air which is present inside the lungs after the forceful expiration. sorry, normal expiration. देखिए मैंने कहाँ पे इंडिकेट किया? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आपके लंग्स में ये अमाउंट एंड ये अमाउंट, ये दोनों अमाउंट रहेगा कि नहीं? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद मैं बोल रहा हूँ. आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स इज ERV plus RV. yes or no? That is called as functional residual or reserve volume, sorry, capacity, that is FRC. FRC क्या है? FRC is equal to functional residual capacity क्या है? ERV plus. तो ERV RV मतलब क्या है? The definition क्या है FRC का? The amount of lungs, sorry, amount of air present inside the lungs after the normal expiration की forceful expiration. अगर forceful expiration हो गया तो RV. देखो एक एक वर्ड से डेफिनेशन चेंज हो जाता है. The amount of air present inside the lungs after the forceful expiration is called as RV. The amount of air present inside the lungs after the normal expiration is called as FRC. समझे? And this is vital capacity, that is VC, and this is total lungs capacity. Are you clear? मैं BC and TLC के बारे में अभी बोल नहीं रहा हूँ. ये डायग्राम बना लीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम ये कैपेसिटी के बारे में स्टार्ट करेंगे.